देख।
Sir, your voice is not coming. Yes, sir.
Hello, students. Now you able to. Uh, Yes, sir. यस okay, सर, okay, Yes, ma'am. अब तक नहीं आवाज आ रही थी। अब तो कुछ साउंड नहीं आया सर. okay. Sorry, sorry. I just repeat all the things. So here we going to start step by steps how to draw the ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. सो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए ड्रॉ करने के लिए व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हम जिस भी डायरेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को देखेंगे उस डायरेक्शन की सारी डायमेंशन जीरो कर देंगे. ऑल डायमेंशन इन ऑब्जर्वर डायरेक्शन इज जीरो. So see here, this is our object. So what happened? ये हमारा फ्रंट व्यू का डायरेक्शन है एंड दिस इज अवर टॉप व्यू डायरेक्शन y. Okay, and this is our side view direction z. Okay, so if we okay, this is z. So if we observe the product in x direction, observe the product in x direction, तो क्या होगा कि आपका 20, 40 और 20 ये जो डायमेंशन होगी ये जीरो हो जाएगी, मीन्स देयर इज नो डायमेंशन. एंड what we observe, this 80 diameter, 80 length, 100 length, and this here what happened, 40 r is there. So the total length is 100 here to here. Total length is 100. Then what happened? Out of 100, 40 means we get 40 rectangle here and 60 here to here because this is given. So what we get in front view, so front view we get only this much. I just hash the line by red. So in the front view we just get this much. Straight the line like this. So फ्रंट व्यू में हमें ये जो मैंने रेड लाइन से हैश एरिया किया है इतना ही हमको विजुअल होगा. एंड इन द टॉप व्यू व्हाट वी गोइंग टू सी, आई चेंज द कलर. In the top view we just made this line. Okay, start the hatching.
So this shape we get in our top view, green one. Okay, and in the side view we just get this blue color. Okay, so side view, front view, top view, we get this much image. Okay, so students, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए आपका इमेजिनेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, योर इमेजिनेशन इज मच मोर स्ट्रांग टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू, बिकॉज एक्चुअल में हम जब आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं तो हमको ऑल ओवर थिंग्स दिखाई देता है, मीन्स ऑल ओवर ऑब्जेक्ट विजिबल होता है. लेकिन we just assume that we only see from the x direction. Okay, और हमारे आंख से जो रेज निकल रही है, वट एवर द रेज कम आउट टू आवर आईज, दैट इज 90 degree, means orthographic rays, and we are only able to see that direction only. So see what happened here. Yes, L shape in the front view. Top view, what happened? We just 20 and this is 40 mm diameter and radius is 40 r. See, so and this is in the scale of 1:1, and drawing is in the first angle because our front view in the top and top view below the front view. Okay, if our front view in the above the top view, then definitely this is the in first angle. This is in the first angle. So figures show isometric of a simple object without dimension. So it is three orthographic view: front view, top view, and left hand side view. Use first angle. See, means we have to draw the front view, top view, and left hand side view of this product. Okay, so A, B. So here from the this direction what we can observe, मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन से देखते हैं, इस डायरेक्शन से देखते हैं तो वी जस्ट ऑब्जर्व ओनली ए एंड बी, ए एंड बी. ओके, सो जो भी सरफेस है ए का और बी का वही हमारा फ्रंट व्यू होगा, वो हम फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे, ए एंड बी. एंड टॉप से हमको क्या दिखेगा? टॉप से देखिए, मीन्स इस डायरेक्शन से अगर देखेंगे तो टॉप से क्या दिखेगा? ए दिखेगा
बी दिखेगा और सी दिखेगा स्मॉल में, ए बी सी फ्रॉम द टॉप, एंड नाउ फ्रॉम द साइड 1, ये साइड दिखेगा, अगर ये 2 है 2, और क्या दिखेगा, ये भी दिखेगा 3। ओके, सो ये 3 हमको साइड व्यू में दिखेगा, लेकिन क्या है कि ये दिखेगा तो मतलब टॉप से दिखेगा और साइड से भी दिखेगा, लेकिन इस ओरिजिनल शेप में नहीं दिखेगा, ओरिजिनल शेप में नहीं दिखेगा। वी जस्ट एबल टू सी वर्टिकल rectangle here, and from the top horizontal rectangle is here. Okay, not it full dimension. So let's start from the front view. We have to visual this shape and B. See, AB, this is our capital A and capital B, and see, and now top view. So what in top view visual, we see AB and C, 3 face. Side view 1 2 3, see 1 2 3. How easy is this? So from the beginning you can note down the face, which face you able to see in particular direction. पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप कौन कौन सा फेस विजुअल है आपको, यू कैन नोट डाउन दैट बाय एनी सिंबल। सी, अभी देखिए कॉमन फेस क्या है, यहां पे बी, यहां पे बी, मतलब ये फ्रंट एंड साइड व्यू में कॉमन है जो दिख रहा है, मींस बी फेस और 3 टॉप में भी दिख रहा है और साइड में भी दिख रहा है, तो वी जस्ट नोट डाउन दैट। अभी देखिए ये थर्ड एंगल मेथड यूज कर रहे हैं हम, और ऑब्जेक्ट हमारा ये है। तो अभी जब हम इस फ्रंट डायरेक्शन में देखते हैं, वी लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट, देन व्हाट वी एबल टू नो, we just able to see this one, a shape is there. Okay, so what we able to see from the top, so this is A, B, C, 3 shape. And if we go for the side, then 1 2 3 face. Okay, so we can make according this. So this is about the third angle. So third angle, where we make the third angle, we make front view below the top view. Okay, A B C 1 2 and 3. Okay, that is our. Now how we going to start? See, front view, only one face, front view. Okay, A, we project the line above, and this is our top view.
In top view, A, B, C, three faces there, right here, A, B, C, three face. And now side view, 1, 2 and 3, three faces there. Okay, so whatever the face we observe in particular direction, we just draw their shape in that view only. Now see another example. Figure show isometric view of a simple machine component. Now machine component is come here. Draw following orthographic view and dimension them. Front view, top view and right hand side view. And here it is given always. Okay, because above and below is not given, so in the problem it is given that which coordinate system you going to use. So here first angle method is used, means first coordinate, we draw the projection in the first coordinate. And in the first coordinate what happened, front view always above the top view. So see the object, this is our object. So this is our object. See, this is our 75 mm. Okay, and this is our 25 mm. So 75 plus 25, how much? 100. So we just draw the 100 line. See, L. For the front view, L is 100, like here. Okay, because see here, what is the height? Height is 30. 30 is there and 10 is there. So height is 30. Okay, that's it. So in the front view, L and H is found. This is our H. See, this is our H, and from here to here means this is our L. So in the front view we just see this much. Okay, and now what is that? In the front view we also able to see this rectangle. So this is 40 and this is 30. So from front view, this length is 0. This length 50 is 0. This 50 is 0. And from the top, this 10 is 0, this 30 is 0. And this 30 is also 0. So let us start. Orthographic view, front view. So we make a rectangle. How? L100 and H40.
and we make all the dimension. So this is our 30, this is our 10, this is 10, here to here, this is our 40, this is 10, and this is 25, this is 25, and this dimension is 75. So this much length are dimension visible to the front view. Now see top view. See top view, L into D, 50. So this is length and this is D50. So whatever the length, we just project it. Now side view. See all the dimension given here. Side view. See side view. Here we able to see all the things. So students, do you have any question? No, sir. So main important things in here,